Okay, I think we are live. तो अहमदाबाद पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ये गाना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, बट जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ. बहुत बुरा हुआ. यस, धवल एंड अनमोल एट योर कन्वीनियंस रोते हैं. बताओ, मुझे तो समझ में नहीं आया. मैंने आशु से भी झगड़ा कर लिया इन टर्म्स ऑफ किसकी गलती है, बट लेट्स हियर योर थॉट्स. चल धवल बात. मैं बताऊं तो आई थिंक पहली 5 मिनट में मुझे मतलब 10 मिनट में उल्लू बना दिया था लिवरपूल ने. डिस्पाइट मैं बोल रहा था कि हम आगे जाएंगे, पर वही मिडफील्ड का वो जो भी था, वी गॉट एक्सपोज्ड. और आई एम नॉट सरप्राइज्ड. Real Madrid obviously was a better team. They were always going to play well. So not surprising given हमारी जो कंडीशन है अभी. बाबा एक चीज ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आई थिंक मेरा जेन्युइन फीलिंग ऐसा था कि अगर हम लोग स्टार्टिंग से बुरा खेलते हैं और हम ये मैच हार जाते तो शायद इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट हमारा सीजन बुरा गया है. मे बी दैट फर्स्ट 20 minutes gave us that hope and that turned into this disaster of a second half. I think उसके वजह से, because if you consider first half also it was not that bad considering Liverpool standards. हमारा सीजन इतना भी बेकार गया है. Both teams scored a great goal on their own and both goalkeepers basically shagged it. जो भी बोलना है क्या करना है, but it was equal. Like the first half was equal. Like first 20 minutes we dominated, second 20 minutes they dominated. But then after that second half happened. Anmol, your thought? ये बताओ कैसा हुआ है. मतलब अगर तुम स्ट्रिप क्लब जाओगे तो लड़की तुमको टर्न ऑन करके छोड़ देती है. KLPD you mean? तो हम 20 minutes, तो आई थिंक आई स्पोक ऑन द ट्विटर स्पेस एज वेल लास्ट नाइट दैट कि जो फर्स्ट 20 minutes थी we looked like prime Liverpool, like how Mane, Firmino, Salah used to play. Like the pressing was very intensive and the whole team was going for every ball. But उसके बाद I think second goal के बाद जो first goal उनका पड़ा, I think switch off हो गई उसके बाद. तो अभी first half तो अभी थोड़ा decent खेले थे हम, but second half पे आने के बाद पता नहीं टीम को क्या हुआ था, क्या गेम मैनेजमेंट, क्या प्लानिंग हुआ था क्लब का, बट टोटल कोलैप्स. थिंक एक चीज में मेंशन करना रहेगा कि हमारा जो ये प्रॉब्लम है इंटेंसिटी का. थिंक हमारा जो मिडफील्ड है टू एजेड है, ऑब्वियसली एवरीवन नोस इट. तो ये जो इंटेंसिटी लेवल्स है इस सीजन दे हैव बीन वेरी पुअर. जो रनिंग स्टैट्स है वो सारी चीजें भी है, बट कंबाइंड विद दैट फॉर्म भी पुअर है. लाइक हमारे जो प्लेयर्स है दे आर नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड. लाइक साला जो भी फॉरवर्ड्स है वो आपको कैरी कर सकते हैं. लाइक इन दीज मोमेंट्स हम लोगों ने तुम्हें 2 गोल दिए, बट अगर डिफेंस में और मिड में लीकेज है तो देयर इज नो वे वी आर गोइंग टू make it in all games. Premier League में it's possible. Same issue. Opposition is smaller caliber. न्यूकासल के सामने भी यही हुआ था. Start was very good. Once they were down with 10 men, हम लोग एलिसन की वजह से हम लोग बचे. We weren't able to cope up with their pressure. Even with 10 men, they were attacking much better than what we were. Yeah. तो वो intensity था वो गिर गया था. Yeah. तो आई थिंक ग्रुप में व्योम ने एक बहुत अच्छा बात बोला था. और अल्टीमेटली लाइक अगेन आई मतलब सबके साथ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहता ही है, बट दैट पॉइंट रेजोनेटेड इज लाइक he has players who are 30 and he is implying tactics which go only for players who are 20 and 27 के बीच में. And if you look at it, last season भी हमारे लोगों के बीच में इतना बहुत डिस्कशन हुआ था ना, like when Salah and Mane were supposed to get contracts and then we were like कि old players को हमें contract actually देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, or we should go for young people. I think that kind of ties down to this problem also कि either your philosophy is heavy metal football, so I need to buy players and 30 होते ही drop क्योंकि you can't cope up with the system, or you adapt with the players that you have कि हाँ ठीक है अब मेरे players. अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि स्क्वाड
Squad needs to replenish, renew, तो and रीबिल्ड, टोटल रीबिल्ड चाहिए, क्योंकि तो Yeah. टेक्निकली अगर देख हमारा फिलोसफी कैसा है, सेल टू बाय, बट Hmm. रिसेंटली लास्ट 2 साल में ऐसा हो ही नहीं रहा। ना भी कीटा This अभी फ्री में जा रहा है, see, फर्मिनो का अभी se- श्योर नहीं है, hmm. मिलनर इज 37, उसका कॉन्ट्रैक्ट का कुछ वो नहीं है, चेम्बरलिन ऐसे ही पड़ा हुआ है। Hmm. अगर सेल टू बाय कर रहे हैं वो लोग, हम सब फ्री में बेच रहे हैं। हमने बेचा है अभी मिनामिनो को बहुत मिनिमल प्राइस में बेचा है। Hmm. हमने माने को 30 मिलियन में बेचा है। लाइक वी कुड हैव गॉटन गुड मनी आउट ऑफ दीज प्लेयर्स इफ यू वांट टू Hmm. बाय गुड प्लेयर्स। तो अगर सेल करना ही है तो स्मार्टली करो। नहीं, एक्चुअली सो इन दैट सेंस आई थिंक अगर अगर फिलोसफी ये है कि हमें प्रेसिंग फुटबॉल खेलना है, तो क्लियरली प्लेयर्स एट द एज ऑफ 29-30 consistently doing it for 5 years, playing each and every game, cannot do it. Hmm. हाँ, नहीं वो तो ऑब्वियस है। सो अगर आई थिंक लोगों का, जनरली फैंस का जो क्रिटिसिज्म है ये है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा फुटबॉल ऐसा है, ड्रेनिंग है, 4-5 years के बाद यू काइंड ऑफ टेक एवरीथिंग आउट ऑफ द प्लेयर, व्हाई डिडंट वी प्रीएम्प्ट दिस, यू नो, लाइक दैट्स transfer policy, कुछ भी हो, like sell to buy. Hmm. If it is sell to buy and if you know that you need to replenish your squad, you could have sold Mane maybe a year before, gotten even more than that. We could have sold Salah this year. Like, I mean, I'm Yeah. saying all these may be wrong right now because these are all really good players. But if that's the philosophy and if the club needs to have younger players keep coming up, use them for 5-6 years to their full capacity and let them go, तो बट ये वैसा नहीं होना चाहिए, ये हुआ, है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वी हैव इन्वेस्टेड इन यंगर प्लेयर्स। ऐसा नहीं है। हमने हमारा फॉरवर्ड लाइन देखेगा, वी हैव 6 फॉरवर्ड प्लेयर्स राइट नाउ एंड ऑल लाइक आर गुड प्लेयर्स। अगर तू देखेगा डियाज है, हमने 3 इयर्स, लास्ट 2 इयर्स में हमने डियाज, जोटा, नूनियस, हमारा फॉरवर्ड लाइन हमने Gakpo. प्रॉपर कर दी थी। गैक्पो पर्सनली आई फील अगर ये पैनिक बाय था, बिकॉज वी वर डाउन विद आई थिंक ओनली फर्मिनो एंड साला। इंजरी इश्यूज थे और ये भी था अगर कि लाइक अगर फर्मिनो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि नहीं, I think if you like look at future this, proofing, yeah, we might be selling, 1 or 2 if you look at attackers and so. this from a future perspective, अगर गैक्पो के पैसे अगर हम मिडफील्डर में लगाते, तो this would have so been a different scenario right now. but अगर Yeah, exactly. but don't you think that would have been a this season fix rather than looking forward? वो मिडफील्डर तो वैसे भी चाहिए हमको। नहीं, एक वैसे भी नहीं, एक चाहिए। नहीं, हमको 3 मिडफील्डर चाहिए। Maybe we were very late even in January. I mean, by January our season wasn't salvageable, right? I'm playing devil's advocate. I'm not saying कि जो तू बोल रहा है वो सही नहीं है. I'm playing devil's advocate. I'm saying कि like wouldn't have, maybe Cody Gakpo is more of a future plan rather than, अगर उसका पैसा हम अभी मिडफील्ड में लगाते तो it would have been a fix for this season. Maybe उसके बाद भी अगर if we would have gotten a midfielder of our choice, शायद हम टॉप 4 में भी फिनिश नहीं करते। तो isn't there a trade off between कोडी both the गैक्पो decision? को के आने से उतना कुछ डिफरेंस हुआ नहीं है, क्योंकि इज गुड ऑन द बॉल, बट विदाउट द बॉल ही डज नथिंग। ही इज नॉट Yeah, अ फर्मिनो टाइप प्लेयर के जो वो खींचेगा प्लेयर्स को उसकी ओर और स्पेस बनाएगा। that I agree. That तो I agree. Right. उसको मतलब, और आई थिंक 3-4 मैच खेला गैक्पो, और फर्मिनो फिर वापस आ गया था, Yeah. और उसमें भी उतना गैक्पो का उतना कंट्रीब्यूशन था नहीं। ही रिसेंटली ओनली स्कोर थी, उसका फर्स्ट गोल अभी अभी मारा है उसने 2 या 3 मैच पहले। तो आई थिंक गैक्पो के पैसे, चलो पहले भी हमने ट्रांसफर में आर्थर को लिया, तो वो आर्थर भी भी बैड इन्वेस्टमेंट है। बैड मतलब लोन पे लिया है, बट स्टिल उससे अच्छा कोई, चलो प्रीमियर लीग प्रोवन कोई डिसेंट प्लेयर भी ले लेते, तो समवन लाइक वाइनाल्डम हु कैन प्ले एवरी मैच, एंड चलो नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एंड नॉट वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द पिच एज वेल, बट डिसेंट हु कैन प्ले द फुल 90 मिनट्स एंड गेम को कंट्रोल कर सकता है, वैसा प्लेयर। चलो So let's get back to the एक game इसमें specific. एक चीज इसमें ये है, लाइक आई जस्ट वांट टू ऐड कि जो हमारा लाइक दिस डिबेट कैन गो ऑल डे लॉन्ग, लाइक किससे लेना चाहिए था Exactly. और क्या क्या कौन सा वाइज इन्वेस्टमेंट था, बट आई थिंक द बिग प्रॉब्लम इज लिवरपूल के लिए जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है, ये जो स्टाफ है रिक्रूटमेंट में, और ये सारी ये दीज पीपल आर लीविंग, तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम देयर rather than coaching और ये है सब में बट कि यहाँ से पूरा मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम या है।
तो वहां पे आई थिंक क्लब को फोकस ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर रिकमेंडेशन ही नहीं आएंगे अच्छे प्लेयर्स के, लेट्स से फॉर समर, अगर सिर्फ क्लॉप ही डिसाइड कर रहा है ना कि मुझे ये प्लेयर लेना है, तो इट विल नॉट वर्क वेल, बिकॉज तुम पहले भी देखो एडवर्ड्स एंड जूलियन वार्ड, ये सब दे brought in players, Klopp evaluated them, said yes or no. So we all know Salah, Klopp ने select नहीं किया था Salah. So imagine I I अगर उस yeah. So I there are a lot of things जिसको अच्छा होना पड़ेगा for summer. नहीं, So I this think this उसके problem बाद is from FSG till every player in the squad. yeah In between, yeah everyone is at fault right now yeah because मेरे Klopp मेरे himself is at fault because he's out of his depth and he's out of his tactics right now. yeah. वो खुद I clueless think होता है. I So think Klopp is उतना we are seeing. versatile नहीं है. We know Hmm, that he will stick to his guns. He Like will always play 4-3-3 hmm. and he's मैंने ऐसा always assume up किया, to his like from formations. Gakpo signing I'm thinking that he's thinking कि मैं outscore करके I will try to salvage my season, because he doesn't see any solution to midfield. Like एक भी लाके fix नहीं होने वाला है in my opinion, and probably like Klopp भी यही सोच रहा है कि at least I will try to outscore the others, तो at least हमारा top 4 आ जाए. So Uh, basically that's what I think, but I'm not an expert, football expert. there are two other things also. I feel मैंने कहीं पे तो I was listening. I don't exactly remember. Somebody made a really good point. Say अभी specifically for Liverpool and clubs like us, you should never have complete authority of transfers on managers also. तो फिर तुम्हारे स्काउटिंग सिस्टम का क्या फायदा, तुम्हारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर का क्या फायदा. Yeah. Generally the job of getting proper players, or at least getting the list of proper players who fit the club profile, is the job of sporting directors. And I think माइकल एडवर्ड्स के निकलने का एक ही रीजन था कि दैट दिस इज ऑल रूमर. सो but they say that Klopp and Linders wanted more say in transfers than Michael Edwards, and he felt like he will not be able to effectively do his job, so that's why he But went. अभी So चलो अगर पॉइंट फिंगर्स करनी हो तो नहीं किसी की भी no, नहीं I'm तो just saying, yeah. अगर स्क्वाड बिल्ड करना हो तो कॉमन सेंस है यार. तू प्रैक्टिकली सोच. नहीं, समझ रहा है? आई थिंक क्लॉप की नाइविटी तो है इन टर्म्स ऑफ लाइक तू अगर चलो हम सपोर्टर्स है सिंस लास्ट सीजन हम सबको पता है कि हमको मिडफील्डर चाहिए. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. क्लॉप तो मैनेजर है, उसको तो पता ही होगा कि मिडफील्डर चाहिए हमको. तो मिडफील्डर में इन्वेस्ट क्यों नहीं करेगा वो. maybe a really crude question, but do you think like Klopp is still not a world class manager just because like तुम दूसरे क्लब्स में देखोगे, दूसरे मैनेजर्स देखोगे, maybe he is naive because he has never managed a club with this kind of success. He's just done Mainz and Dortmund. So this is not necessarily a very superb resume. तो इसके वजह से you see like okay, उसने प्रीएम्प्ट नहीं किए, ये सारे चैलेंजेस आएंगे, एंड ही वाज वेरी नाइव इन टर्म्स ऑफ हिज अप्रोच. डू यू थिंक दैट कुड नहीं, बी द रीजन? ये जो लिवरपूल के प्लेयर फैंस है ना, जो यूनाइटेड मैड्रिड वालों के साथ बैठते हैं, ये सब सोचता है. लाइक इट्स नॉट रियली ट्रू. क्लॉप ने I'm not प्रूव Klopp किया out, है. but I'm sure Klopp is a world class manager, but या एग्जैक्टली. उसको टैक्टिक्स आई थिंक थोड़े टैक्टिक्स में वो हो जाता है. वो गेम मैनेजमेंट में थोड़ा वो या he's lacking, but still he's on par with if you say Pep या Guardiola or ठीक Coutinho उसके or हिसाब any. से लाइक द वे आई प्ले इज द बेस्ट वे आई कैन प्ले, वही है. लाइक ही इज नॉट लाइक एक मैच में मैं 3 टैक्टिक्स लाइक 30 मिनट में ऐसे खेलूंगा. ही इज नॉट लाइक दैट. वो क्या है, वो उसके टाइप का वो प्योरिस्ट है. लाइक मेरी टीम अटैक करेगी, दौड़ेगी, सामने वालों को स्वॉर्म करेगी, वो उसकी ये फिलॉसफी है. दैट इज ऑल परफेक्ट इन फ्रंट. बट आई थिंक प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, लाइक a lot of Liverpool fans keep saying the things like this is because Klopp ने इतने सारे aged midfielder को आगे लाया है. Like Henderson को contract दिया, Milner comes on and plays in Real Madrid game. तो ये सारी चीजें it's natural. We are not doing well, and fans are getting frustrated. और ये है But I don't. Yeah. But Klopp की responsibility है यहाँ पे, and I think he has failed in reinforcing the squad in the mid. Because he just उसकी ये गलती भी है, which was over there in Dortmund too, कि he overly trusts the player he has, कि नहीं ये लोग मेरे को आके ले जाएंगे. Right. And club is also happy if it doesn't spend money, क्योंकि we have so many high wage earners. I think
मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइक यू नो वी लाइक यू नो सॉरी मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि वी डोंट स्पेंड, we will spend like you know the transfer fee and 100 billion that will be amortized across 5 years, but the wages are, you know, we have players who just don't play and they are there on wages. That's weighing down club a lot, ताकि हमारे पास स्पेस ही नहीं है कि we can bring in good players and pay them like you know at least कोई दूसरा 100 की ऑफर दे रहा है तो हम 120 दे के ले आ, something Right. like this won't happen until we have So like you I know think deadwood that on. exactly that means that there has to be a clear out, and I think there has to Yeah, be a clear message saying if you are at not if you're not at this level, consider yourself not playing or being yeah, sent out. I think उस मामले में generally like obviously हम लोग banter करते हैं तो हम लोग आशु और उन सबको ऐसा बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसे तो हर साल player को निकालो लेके आओ, but hmm. still there needs to be a standard set and there has to be a level of Yeah. इतना ही झेला जा सकता है, तो इससे मेरा ज्यादा तो नहीं झेला। कंसर्न यहाँ पे लाइक नाउ वी डोंट हैव जूलियन वार्ड और यू नो एडवर्ड्स, तो जो रीबिल्ड है who will be responsible, because क्लॉप ने अकेले ने नहीं किया है, we were not seeing him doing this at Dortmund, like वहां पे भी उसके पास अच्छी वो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल की टीम थी, माइकल जॉर्क और वो सब थे, राइट? I think Now they in the will summer they, I think if he still wants Bellingham for like you know 130 140, बेलिंगम okay, तो I don't know, maybe he क्या just लगता है wants बेलिंगम ये Bellingham to लेके आएगा लिवरपूल? I don't know. नहीं Like, मैंने ऐसा पढ़ा है कि Klopp just wants Bellingham. I don't really believe that. मैं तेरे को Nobody एक will want चीज anyone, एक, but no one will want to come to a club who is playing like this right now. चलो Yeah, रोशन तूने बोला कि अभी सारे प्लेयर्स अपने ओल्ड हो गए, वो पॉइंट परफेक्ट है, बट आप ये जो रीबिल्ड का पॉइंट है ना, दे शुड कीप ऑन गोइंग एवरी 2-3 years. हाँ ये हमारा स्क्वाड yeah, चल रहा है 2017 2018 से, अभी एक even प्लेयर before that like 2015 2016 से ये स्क्वाड आई थी, 16 17 से you can say the start of this era. अब उतने प्लेयर मतलब जो हमने मेन प्लेयर्स है, Oh, मतलब 17 is probably the 17 year. 18 से यू कैन सी ऑल ऑफ देम आर स्टिल देयर, मोस्ट ऑफ देम. चलो माने गया है, वाइनाल्डम गया है, लॉवरेन गया है, बट उसको तुमने रिप्लेस कैसे किया है? वाइनाल्डम को तुमने रिप्लेस किया है नहीं, किया है तो अभी मतलब किससे किया है? आर्थर लाओ या नाबी कीटा ऐसे ही पड़ा हुआ है. Thiago also gone. फेबिनियो पता नहीं खत्म हो गया है इस सीजन, क्या है उसके, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में पता नहीं. तो I think this process should be like every 2-3 years you need to get in fresh legs, young players who can, you know, in each position तो चाहिए, मतलब नहीं कोप आई अप थिंक और एक हेल्दी चैलेंज भी तो होना चाहिए ना, जैसे अभी तू राइट बैक पोजीशन में भी देख ले, लाइक है ही ट्रेंड इज द नहीं. सोल एंड ओल पर्सन. जब से आर्नल्ड आया है तब से there has been no right back. मिलर खेलता है राइट बैक अपना. नहीं, we bought in Calvin Ramsey and he's been injured, सर्जरी so है, we पूरी haven't सीजन gotten गया है. anything. Yeah, तो थोड़ा सा बैड लक भी है, थोड़ा सा indecisions and bad और decisions है, लेटली but हमारा everything. रिक्रूटमेंट इतना खराब हुआ है. वी हैव ओनली बीन साइनिंग फ्रेजाइल प्लेयर्स. आर्थर मेलो खेलेगा? आई डोंट थिंक खेलेगा. लुइस डियाज वेरी गुड प्लेयर, अनलकी है वो, खाली इंजर्ड. जोटा इंजरी रिकॉर्ड वेरी बैड. नाबी Thiago also. खेलता ही नहीं है. चेम्बरलिन वेरी बैड अगेन. तो मतलब इंजरी वाइज अगर देखे जाओ, थियागो आल्सो अमेजिंग प्लेयर बट इंजरी रिकॉर्ड अगेन वेरी बैड. कोनाटे मैटे चलो खेलता है बट लास्ट सीजन पूरी सीजन खेला, बट तो अभी इफ यू सीज ओवरऑल लिवरपूल में जितनी मैचेस खेला है, इज इंजरी रिकॉर्ड इज वेरी बैड. इवन कोनाटे लेटली बहुत इंजरीज पिकअप कर रहा है. आई थिंक ओनली कंसिस्टेंट प्लेयर हु हैज बीन विद लिवरपूल हैज बीन रॉबर्टसन. आई थिंक Salah and Robertson. साला एंड रॉबर्टसन यू कैन से. चलो लेट्स डिस्कस अबाउट द गेम. तो अभी व्हाट वेंट रॉन्ग, तो हम लोग तो बहुत ही लंबे टेंजेंट पे चले गए, बट सॉरी टू कट यू ऑफ, बट खाली एग्जांपल तू रियल मैड्रिड का ले ले. उन्होंने अपना डिफेंस, रामोस गया, उसके बाद उन्होंने अपना पूरा बैकलाइन, मार्सेलो गया, तो उन्होंने मेंडी लाए, मिलिटाओ लाए, उनके पास अभी रूडिगर ले लिया फ्री में. मिडफील्ड में क्रूस, उनको पता है क्रूस, मॉड्रिच, कैसामीरो ओल्ड हो गए. कैसामीरो तो ऑब्वियसली चला गया यूनाइटेड. नहीं, बट दे गॉट कामाविंगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो लोग ने रिफ्रेश किया पूरा स्क्वाड. कामाविंगा लिया है, चुआमेनी लिया है, वाल्वार्डे लिया है, वो तो आई थिंक 2-3 साल से है. और अगर स्ट्राइकर पोजीशन में देखो तो रॉड्रिगो और विनीशियस
एंड आई थिंक दे गॉट अभी वो 16 साल का एक और ब्राजीलियन कोई विंगर ले आए, हाँ देखा है, हाँ, यस यस, आई नो आई नो। और Yeah, नेक्स्ट ईयर अभी वो ओशिमेन ले लेंगे नेपोली से। yeah. तो मतलब They दिस they have been able to साइकिल replace. नीड्स टू बी, यू नो, एक एवरी 2-3 इयर्स वो बिल्डअप रीबिल्ड होना चाहिए। Hmm. और एक वैसे एक अब रियल मैड्रिड बार्सिलोना है नहीं कि मतलब यही सेम स्क्वाड से हम 15-15 टाइटल जीत जाएंगे। Yeah, I think it comes down to mentality, right? Like you have a squad list in front of you, you sit and look at like, are these player world class? Like क्लॉप है ना, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक हो जाता है, लाइक ही ट्राइज टू प्रोटेक्ट प्लेयर्स, वो सबको अच्छा है अच्छा है अच्छा है बोलता है, लाइक बट एट सम पॉइंट देयर हैज टू बी सम ब्रूटल ऑनेस्टी एंड से ओके, but if I'm supposed to play, let's say अगर क्रूस मॉडरिच कैसेमीरो, if I'm playing these three, would a Naby Keita, Axel Chamberlain, Henderson in their primest of the primes, would that work out to be the world class midfield? We have to be super honest about it. Like तो काम कब तक चलेगा? वन Like ऑफ you know, मैचेस के लिए तो मतलब एनीवन कैन बिकम वर्ल्ड क्लास। नहीं exactly. So wait, it has to be टेकिंग द sustained. एग्जांपल ऑफ बार्सिलोना ओनली, लिवरपूल बार्सिलोना। I I think एक चीज है हमारे, like as far as Liverpool is concerned, like will not be as rich as those clubs, like even for few years until Hmm. हमारी जब जो revenues really एक तो वो भी है, crystallize. या सो हम लोग का आफ्टर जॉर्ज हिक्स, टॉम हिक्स एंड जॉर्ज जिलेट वाला भी, it is good that FSG came in, that investment came in, and Yeah, like these are also things where once we have the money, then we can also brute force से transfer market में भी जा हाँ, सकते हैं. I think we're yeah, still a little timid. We still think यार हमारा success defines what kind of players we get. yeah, If you look at Real Madrid, even if they have a poor season, there will not be a player who would say no to going to Real Madrid. So yeah. that kind of pull still needs to come नहीं, बट द from the थिंग इज club in रियल itself. मैड्रिड लास्ट सीजन किसी को नहीं लग रहा था, वो लोग लग रहे थे कि राउंड ऑफ 16 में आउट हो जाएंगे, जीत Yeah, गए, Champions League. चैंपियंस लीग So जीत गए। Like it's more like mentality. Real it Madrid is. It की is definitely. mentality है. Yeah. Like they have players who are actual really absolute champions. Like Modric भाई है टीम में. एनफील्ड पे He, हारे हम 5-2। yeah. आई थिंक So पता नहीं 1950s में हुआ होगा ऐसा, 5 गोल हमने एनफील्ड पे खाए होंगे, yeah, it's और not. 2 गोल तो लीड करने के बाद। hmm. Chalo, let's Yeah. discuss this point. तो Could तुम्हारे have point ही नीचे like जा रहा है. Could this have been avoided? I think you want to talk about game, right? Yeah. So Yeah. could this So have been avoided? मैं yes. थोड़ा छोड़ देता हूँ and then उसके बाद you guys can build up on it. Yeah. I would say, first of all, I wasn't expecting us to score 2 goals initially. And to be brutally honest, even with the performances in Premier League, you're playing Everton, Newcastle. That's not a good benchmark to say that this is a really good midfield. Even in the podcast, हमने जब preview में किया था, maybe it's just it's Liverpool, it's our club, so you won't want to like shit on them. So therefore, ये midfield genuinely उन्होंने अच्छा खेला था. They had controlled a lot of things and we had seen it. So इसके लिए हमने वो चीजें बोली थी, but at the end of the day comes a world class midfield and I think they just crumbled. Yeah. But could this have been avoided in terms of tactics? Maybe like tactically where we went wrong. Agar if you guys can tell, yes, we dropped off intensity, but with the bench we had 2 substitutions at correct time. तुम लोग बताओ how you could have done. What do you think could have been done to avoid at least a 5-2? Maybe if the match finished at 2-2, I still. think we were unlucky first of all. जो हमने जो at least 2 goal खाए. Like हमें like कोर्टोआ ने mistake की, like same Alisson ने किया, which is I mean like it cancels each other out. But still at least that's a unlucky goal जो हमने concede किया. और उसके अलावा तुम जो goal देखो, like Real Madrid ने मार दिया. Like that, those are like not something that defines how good we are. It just says how bad we are in mental space or positionally or ये सारी चीजें. One mistake happens and everything compounds. Like Klopp ने खुद बोला कि 2 goal खाने के बाद like second half में once we considered that poor third goal, उसके बाद we just gave up. So I think that was pretty much clear, story of the season कि अगर हम नीचे जाते हैं तो we are not able to come up at all.
I think maybe if we had lost 3-2 or 4-2, I would have been like, fine at least, because this is a world class team that हम जिसका सामने हम खेले. But 5-2 feels embarrassing, but not surprising. I mean, हमने खेला ही खराब है इसमें. Maybe avoid कर सकते थे, like, if we had like little better luck and maybe just like, positionally better in one goal at least. But yeah, I mean, you can say like, maybe embarrassing too, but also not surprising. But at least we should have kept the intensity. Anmol. ये अवॉइड ऑब्वियसली हो ही सकता था. तुम फर्स्ट हाफ अगर चलो उन्होंने गलती की है तो ऐसा नहीं है कि हमको भी गलती करनी है. और ये एलिसन का ये बहुत बार होता है और हम लोग काफी बार ऐसे डर तो जाते ही है जब एलिसन के पैर में बॉल आता है. लाइक व्हेनेवर ही हैज द बॉल ही टेक्स टू मच टाइम टू क्लियर इट आउट. I mean, if you want, the direct correlation could be उसने लेस्टर के सामने ये चीज किया था एंड हम वो सीजन 1 पॉइंट से हारे. मे बी इफ ही hadn't done that we would have lifted another trophy. Like, मतलब वही बोल रहा हूँ in that sense, he knows that चलो he is good at it as well, but then इतनी हाई इंटेंसिटी वाली गेम है तो सेफ प्ले करके और ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी 2-1 अप और तुमको पता है सामने रियल मैड्रिड है तो चांस वो लोग देने वाले हैं नहीं. तो अब ये मिस्टेक एक मैं कॉल आउट कर सकता हूँ कि वो अवॉइड कर सकते थे. मिस्टेक इन द सेंस इट इज वियर्ड क्योंकि वो इतना क्लोज है तो व्हाई आर यू क्लियरिंग सामने. अगर तुझे करना ही था यू कुड हैव जस्ट स्टॉप्ड द बॉल एट योर फीट. विनिशियस अपने मोमेंटम से चला जाता. यू कुड हैव लाइक मतलब वो उसने जैसे ड्रिबल करके एग्जैक्टली ड्रिबल करके हाँ एग्जैक्टली ही शुड हैव डेफिनेटली ड्रिबल्ड इट एंड देन किक्ड इट आउट. फर्स्ट टाइम मार रहे हो और तुम्हारे सामने प्लेयर तुम्हें क्लोज डाउन कर रहे हो तो योर डिसीजन शुड चेंज. यू कांट से कि आई विल हिट हिज बॉडी. His decision making in that moment felt wrong. And because it felt कि he could have dribbled it past Vinicius and cleared it. तो मुझे I think मैंने ये ट्वीट पढ़ा था कहीं पे, like there was a very freak game, like ऐसी freak mistakes थी, like deflection जा रहे हैं, freakishly concede कर लिए, but doesn't feel कि Liverpool lost undeservedly. ऐसा कुछ नहीं लग रहा है. Like we knew, like Real Madrid like outclassed us. सेकंड हाफ में तो जैसे चालू हुआ क्लॉप बोल रहा है कि जो गोमेज ने जो फाउल किया था विनिशियस पे that didn't look like a foul. मतलब these are excuses which are obviously हमने गेम देखी है तो and in fact Joe Gomez in that moment doesn't clear the ball. Why does he go for the player? Like to ball clear करना है. Like Bajcetic ने भी like जो ball through जा रही है, like these are silly mistakes. No, but like I have seen this with Liverpool. Like Liverpool in their thing to build up from the back, they always don't clear the ball immediately. Like हमेशा player को pull करते हैं, बुलाएंगे और हाँ exactly. Why do you have to do that? Like play safe, let it go for a throw in. Throw ins are probably easier to defend. वही मैड्रिड वही करती थी ना. And at the end of the day, I feel जब हमारा complicated football नहीं चल रहा है, हम उस frequency पे नहीं है, वो confidence नहीं है, maybe just kick the ball out. 3 stories, kick the ball out, get the time. मतलब लिवरपूल सपोर्टर्स भी बॉल फेंकने में टाइम लगाएंगे तो you get the time to compose back. So no nonsense फुटबॉल खेलने के लिए तुम्हें ना तो मैनेजर चाहिए ना तो तुम्हें millions of dollars चाहिए. It just takes a proper footballing sense. And if you're playing top tier football, I think it is not a difficult ask or it is not a demand. Like ऐसा कोई बेकार सा डिमांड नहीं है कि like just to play फुटबॉल द वे इट इज. डिफेंडर्स डिफेंड करेंगे, अटैकर्स अटैक करेंगे और मिडफील्डर्स दोनों को कंबाइन करके खेलेंगे. एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट अबाउट कमिंग बैक टू द बेसिक्स. एंड आई थिंक द बेसिक्स, इफ वी हैड डन द बेसिक्स राइट, आई थिंक वी कुड हैव won the match 2-0 even without consistency. Let's say maybe I'm not sure कि Madrid score नहीं करता. I think the possibility was always there, but maybe 2-2 or at least maybe 3-2. Fighting chance, I was hopeful till the third goal also. When they scored the third goal also, I was hopeful 3-3 भी हो सकता था यार. A 1 goal lead taking it to the Bernabeu also will be a good game. Salah and वो Gakpo almost scored a third goal. हमने वो देखा था, like it was a brilliant like. नहीं first half में, even first 20 minutes में भी we had chances that we could have scored. For sure. Yeah.
भाई तो हम फिफ्थ गोल हमने कैसे कंसीड किया है? फिफ्थ तो तो बहुत ही बेकार। भाई मॉडरिच निकल रहा है, वो जॉग कर रहा है पूरे मिडफील्ड से, फेबिनियो और ये कोई फीबिनो गोमेज ऐसा को करके जाने दे रहा है, अरे तू भाई रेड कार्ड वो खा ले भाई, 4 तो ऑलरेडी खा चुके कुछ हैं। नहीं। आई एम माय फेवरेट लिवरपूल प्लेयर हैज बीन फेबिनियो इन द लास्ट 5 ये years. है, So एंड I am ही his इज बीन द biggest fan, but वर्स्ट। this season has been very very poor. I think it's a pretty fair to say कि हमने like goal we deserve to probably at least draw based on the score goals we scored, but second half maybe we shit the bed. And Fourth I goal, think लोग बोलेंगे डिफ्लेक्शन है, but he shouldn't be in that yeah, position in the first yeah, place. yeah, exactly. वो जो बाइचेटिस की वहाँ पे मिस्टेक थी, like it should not be, we should not be in position कि वो उधर तक आ जाए. Like at least no one tried to stop him, tackle him or anything, or itni sari space. Like even third goal जो Madrid ने score किया, I forgot who scored it. उसको मिलिटाओ कितनी space थी, हाँ भाई, मिलिटाओ तो इतनी सारी मार्किंग जो space. गोमेज ने मार्क ही नहीं किया उसको। Yeah, मैं बंदा भाई रोशन तू मार देता उसको, वैसा गोल था वो। अरे देख, जोनल मार्किंग समझ में आता है, बट उस टाइम पे सब एक लाइन में क्यों थे, दैट डिडंट मेक सेंस एट ऑल टू वही मी। वही बोल रहा हूँ uh, ना कि I read somewhere कि like you sleep off and तो कैसे वो तुम yeah. expect कर सकते हो जीतना। अच्छा, मैं एक और, अच्छा सर धवल बोल बोल, आई जस्ट वांट टू एंड सम दिस Yeah, सेक्शन yeah. विद वन थिंग, वो जो स्मार्ट No, एस go आंसर ahead. दूंगा। Like it was regarding the marking, but it's not important. Go ahead. तो मेरा बस ये कहना था कि इवेंचुअली माय चॉइस ऑफ नैट फिलिप्स wasn't that bad to be honest। मैं क्यों बोलता हूँ पता है, लाइक लोग मुझे कुछ भी यश बोले, को बोलो. अरे यार फास्टनेस की बात नहीं है, एट एट सम पॉइंट यू नो, लाइक ठीक है फास्ट प्लेयर है तो तुम्हें एक फास्ट डिफेंडर रखना चाहिए, ये सब तो बेतुकी बातें भी लगती है मेरे को, सॉरी यश, बट आई डोंट अग्री विद दैट पॉइंट। आई फील ऐसे गेम्स में पोजिशनली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, and Nat We, Phillips has this knack of being at the ball even when you don't expect that the ball is going in that direction. He is amazing. तो फर्स्ट गोल में जो विनिशियस ने गोल मारा, इतना गैप तो नहीं था, उसको क्लोज डाउन नहीं किया गया प्रॉपर। Nat Phillips closes people down properly, and so that is why I said कि he would have been a proper choice, and I still say even if Matip and Gomez are fit for the next leg, Bernabeu में Nat Phillips start करना चाहिए। You have to trust that guy, वही and he करेगा. I think really it will did. be Matic. I think उसको was he in the squad? No, he was not even in the squad. I think कुछ उसका was he ill or something, ऐसा कुछ ऐसा injury था क्या? I I I think I think my I'm not being like मेरा favorite player है इसके लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, but I genuinely feel from what all games I have seen, the way he plays, he can cope up with players who are much faster I than think the him. only reason to start Gomez was because उसके पास थोड़ी pace है to No, exactly. That's what I'm saying. I don't despise the choice. Where I completely understand कि क्यों हमने ये चीज किया है, but I feel if it has to be a strong defensive हाँ positioning player, I think Nat Phillips is really good in it was a positioning it himself. was at the Burnham I would start Phillips beforehand And anyway. if you see, like Phillips ka physique is so good, like he Good can like strong yeah. he can be strong to Vinicius। वो हर बार उसको shoulder check करेगा, he'll tackle him, say कि तू मेरे बाजू से जाके दिखा, like that you need that kind of a player। तो it's just like to rattle him, and और कितनी सारी चीजें थी मेरे दिमाग में which made him the better choice, but I completely understand, I'm no Yeah. Klopp, but for Let's me, see yeah, Bernabeu. let's see We in are we Bernabeu। are capable of scoring 4. And But I'm more than happy to take all of that back, you know। मैं कभी भी बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, I don't hide behind excuses। I say कि मेरे दिमाग में ऐसा था, and if the player does completely opposite the next day, I stand by that player and I stand by my words। Yeah, वो तो obvious है। चलो, नहीं, but Dhaval, okay, I don't think see I don't expect anything out of this team because so the question like is that same. good segue। So what is next from here on? Let's not delve into Premier League much, maybe next here on in saying what is for the next leg in Bernabeu। Do I you think realistically think that we can make it? we can score 4, but we Real can Madrid score also four, can but they score can 4. score three as well. So Yeah, exactly. I think we हम will. जितने मारेंगे उतने वो मार सकते हैं. Okay, हाँ, let's say we score 4 and they score 2, we lose the tie on aggregate, but
What do you guys think? What do you want to see from the squad? Don't think about See some qualification. Maybe qualification is far qualify तो fetched. भूल जाओ, but I think if we put in a good performance, I'll be happy with a draw as well. चलो that will be a positive for the team. थोड़ा प्रीमियर लीग के लिए भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि बर्नमाउथ जाके हमने ड्रॉ किया है. तो Yeah. कॉन्फिडेंस अभी ये सिचुएशन में पॉइंट्स तो भूल ही जाओ. अभी मेन इज टू गेट द मोरल बैक. ब्रेंडन रॉजर्स नहीं करो, द यंग प्लेयर को खिला दो, ठीक है ना? हाँ देखो, बट अच्छा, अगर okay. गो, ब्रेंडन Another. गो एंड रॉजर्स ने गिव एवरीथिंग। यंग स्क्वाड खिला के 1-0 हारा था वो, और एनफील्ड पे हम 3-0 हारे थे. तो Acha, another thing I want to ask is, can we build up on the good things that we did in first 20 minutes? Because obviously ये लोग video analysis करते ही हैं. So are we looking at, okay, what things did we do in first 20 minutes right that can be replicated? And let's say if we come out with a mentality, and instead of playing 20 minutes, if we extended that mentality to the first half, do you think that still we could make this interesting time? Scoring is not the problem. Score हम कर सकते हैं. The problem is when Real Madrid gets the ball and plays through the middle. Problem वहाँ पे, and I don't think we have squad that is capable of stopping them. वहाँ से Makes और sense. defense में. Makes क्लूलेस sense. है, मिडफील्ड क्लूलेस है. तुम बेंच पे से तुम हाँ. नाबी कीटा वो तो बैठा ही हुआ था. तुम ऑक्सलेड चेम्बरलिन और ये मिलनर को ला रहे हो बेंच से. तुम तुम क्या 6 भी करोगे? मारोगे, पर 5 फाबियो खा कार्वाल्हो लोगे तो पता नहीं कहाँ doesn't चला matter. गया. I think the best way is just go at them. मारो 2-3 गोल मार दो, at least दो. अब वो तो सामने मार रहे हैं, you genuine. keep attacking. Like there is no point, holding back. कोई मिलनर या हेंडरसन को खिलाओ मत. I'm a Henderson hater official now. पर उसको खिलाओ मत. Like you're just playing with 10 people. I personally don't hate any player, but हर player का Henderson does things good, but obviously he is not he's the at that captain of the level team right and he now. manages the team well. But देख as a मेरा प्रॉब्लम उससे वही player है. अब उसका टाइम, अब I would say उसका टाइम अप हो गया है. Yeah, He's also think what, 334? I think Liverpool as a team is not a challenge anymore for him. Like he needs to, maybe he can go some other club and help them. But I think his he's services for Liverpool are done. Like he did everything what he could, and everybody should leave at their peak. And like I think, considering all the things that he has won with Liverpool, I think he should probably. he's not physically in shape to play for Liverpool. Like Also with maybe he can injuries. play for you. Also, if you Like see, he was no, injury free for that Right. period, and when Good he was one. really good, and then he got injured, and after injury, he hasn't been the Henderson that we know, that can, yeah. midfield engine wala Henderson. तो वही है, that's the thing. Like मेरे लिए वही problem है कि he's not physically capable of playing for us. Still he was given the contract. Like ये सारे dangers, like मैं फुटबॉल का वो ज्ञानी हूँ नहीं, तो भी मेरे को पता चलता है कि he's not going to be good for us. तो क्लॉप ने क्यों दिया contract? That's the main question. So ऐसी loyalty क्या है? But yeah, that's a separate thing. But ये सारे फैक्टर्स हैं मिड में, इसकी वजह से आई डोंट थिंक वी विल विन, बट वी डेफिनेटली कैन स्कोर 4 और I think 5. yeah, we can score, but I don't think we will. But I'll be happy to see the team put in a performance. At Yeah. least fight for the game and get in Fight for the something out. badge you wear on your chest. That's the only thing we want to look. Yeah. So Don't surrender. Don't just lie down in front of. result-wise, I don't think we'll progress. अगर ठीक होता है. है another Barcelona होता है तो it has to be one of the Yeah. greatest comebacks, because not playing at Anfield this time, we're playing at the Bernabeu. Guys, I gotta go now. ठीक है. See you in the Anyways, next this was supposed to, we were supposed to end it here on that somber note कि ठीक है, Champions League नहीं सही, we'll probably try our best in Premier League, finish 4 and get back into Champions Premier League. League में तो क्या, अभी तो I think we're playing Crystal Palace away now. Zaha masterclass. नहीं, इतना pessimistic मत बनो. We'll figure out something. नहीं. नहीं, we will be back. हम लोग hope करेंगे कि all the things turn up to be good. We'll give Real Madrid a Yeah. good fight. Even if we lose, even if we draw, we'll show them the mentality that we have. And then obviously hoping for top 4 finish. We'll discuss Crystal Palace Yeah. game, maybe pre-game, post-game, जो भी होगा. But thank you everyone who will tune in
मोस्टली सारे इंडिया वाले जो अभी सो रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम. See you guys. Bye. Thank you guys. See you.